Good morning. We are learning about banking and financial market, if you remember, and throughout how the banking and financial market works in our economy. If you remember, during the last year, third semester, you had learned about commodity market and money market and its equilibrium. That's the ISLM model, if you remember that. So now what we that was theoretical aspect, right? Now we are thinking about money market or a financial market, banking sector, insurance sector as a broad practical aspect. Okay, and very much important for let's say uh, MCQs, objective types question, and other types of questions too. Okay, so let's get going. We are seeing the latest trends of banking sector. Let's see, it's directly from your book. So if you want to try for MCQs, or if you want to try for other types of question, you can directly refer these notes if you want to go by book. Okay, that's why I'm just pasting it as far as I can do. Okay, let's start. As per the Reserve Bank of India, RBI, India's banking sector is sufficiently capitalized and well regulated. द फाइनेंशियल मतलब उसमें बहुत अच्छे से कैपिटल है, कैपिटल रेवेन्यू अच्छे से हो रहा है, और उसके साथ साथ इट इज़ वेल रेगुलेटेड टू, अथॉरिटीज आर देयर फॉर दैट. द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन कंट्री एज आर फार सुपीरियर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. इफ यू से हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे है बहुत ही रेगुलेशन के हिसाब से. ओके, credit market and liquidity risk studies suggest that Indian banks are generally resilient and have withstood the global downturn well. हमने ये already देखा था. Indian banking industry has recently witnessed the rollout of innovative banking models like payments, small finance banks. RBI's new measures may go a long way in helping the restructuring of the domestic banking industry. So जो भी नए measures RBI ने लिए हैं, लेते जाते हैं वो डोमेस्टिक बैंकिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प हो जाएगा, रिस्ट्रक्चर हो जाएगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री. द डिजिटल पेमेंट, ये हमने एक्चुअली देखा है अगर आपको याद है. द डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड टू द मोस्ट अमंग 25 countries, with IMPS, India's immediate payment services, being the only system at level 5 in the fastest payment innovation index, FPII. In August 2017, global rating agency Moody's announced that its outlook for the Indian banking system was very stable. Okay, and we have also seen, I guess, these recent trends already. Okay, so let me go just further. हमने ये भी देखा था, अगर आपको पता है, that breakup of banks in India. So there are 38.13% private banks, not regional rural banks, then 12.95% public sector banks, 15.83% private sector banks, and 33.09% foreign banks. If you see, foreign banks are really toughening up. Okay, हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव जब तक है वहां तक हम पहुंच गए थे. आई वांटेड जस्ट टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. सो वी वेर हियर की गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन पैन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, की जो हमारे बैंकिंग सेक्टर को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स को, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छे है, खूप चांगल्या प्रकारे काम केलं जातं. ओके, सो दीज वर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. लेट्स सी. The government of India is planning to introduce 2 percentage point discount in goods and services tax, GST, on the business to consumer B2C transactions made via digital payments. So whatever transaction made by digital payments, you will get 2% point का discount, whatever the rate of whatever the original rate. तो ओरिजिनल अगर 18% है और आप डिजिटली पे करते हो तो इट विल टेक लाइक 16%. सो ये टाइप का गवर्नमेंट प्लान करिए. अ न्यू पोर्टल नेम्ड उद्यमी मित्र, okay, the name is Udyami Mitra, has been launched by the Small Industries Development Bank in India, SIDBI. Okay, Small Industries Development Bank in India, of India,
with the aim of improving credit availability to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the country. तो MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस। तो ये बिजनेस को अगर आप बढ़ावा देते हो तो आप एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को बढ़ावा देते हो। एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उसको पुश करते हो इम्प्रूवमेंट के लिए। वो किसी और को डेफिनेटली अपने साथ साथ इम्प्रूव करने वाला है, क्योंकि ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, सो वो किसी को जॉब देगा। क्योंकि इसका बिजनेस अभी छोटा है, अगर वो इम्प्रूव हुआ तो वो बड़ा हो जाएगा बिजनेस। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं एमएसएमईज, दे आर लाइक अ वेरी good base for a better industry or better business construct. Okay. Mr. Arun Jaitley, Minister of Finance, Government of India back then. Now it is Nirmala Sitharaman. At that time, Mr. Arun Jaitley was Minister of Finance. Government of India introduced the Banking Regulation Amendment Bill 2017, which will replace the Banking Regulation Amendment Ordinance 2017, to allow the Reserve Bank of India to guide banks for resolving problems of stressed asset. So stressed assets प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी म्हणून आरबीआयला इतर बँकना मदत करता यावी म्हणून हे बिल पास करण्यात आलं. That is the Banking Regulation Amendment Bill 2017. It will replace Banking Regulation Amendment Ordinance 2017. Okay. Under the Union Budget 2018-19, the government has allocated rupees 3 trillion, that is 46.34 billion US dollars, towards the Mudra scheme, and rupees 3,794 crores, that is 586.04 US million dollars, towards credit support, capital, and interest subsidy to MSMEs. So मुद्रा स्कीम आणि एमएसएमई को अच्छे से बढ़ावा देने के लिए इतना सारा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और हमारे यूनियन बजट 2018-19 में इसका बड़ा वाला हिस्सा टुवर्ड्स दिस सेक्टर और मुद्रा स्कीम जाता है. द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर हैव अंडरटेकन सेवरल मेजर्स टू स्ट्रेंथन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर. A 2-year plan to strengthen the public sector banks through reforms and capital infusion. Capital infusion मतलब एक्सटर्नल सोर्सेस से अंदर कैपिटल डालना, एक बिजनेस में, एक सिस्टम में कैपिटल डालना. Capital infusion of rupees 2.11 lakh crores, that is 32.5 billion US dollars, has been unveiled by Government of India. तो ये प्लान को सेक्टर करने के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको ज्यादा कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए 2.11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है गवर्नमेंट की ओर से. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट विल एनेबल दीज बैंक्स टू प्ले just a minute, okay, to play a much larger role in the financial system and give the boost to MSMEs also. So MSME को भी बूस्ट मिल जाएगा और बैंकिंग को भी उनका जो पार्टिसिपेशन है इन अ फाइनेंशियल मार्केट वो बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. That's why 2.11 lakh crores, that's a huge amount. In this regard, the Lok Sabha has approved recapitalization bonds worth rupees 80,000 crores, that is 12.62 billion US dollars, for public sector banks, which will accompanied by the series of reforms, according to Mr. Arun Jaitley, Minister of Finance, Government of India. तो ये जो 12.62 बिलियन यूएस डॉलर्स है, ये रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए पब्लिक बैंक्स को दिए गए हैं, सो दैट पब्लिक बैंक्स जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोच से बनाई गई होती है, अपार्ट फ्रॉम द एम ऑफ प्रॉफिट, तो इनको सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स करने की, अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने की पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा पब्लिक बैंक्स दे लैग इन परफॉर्मेंस, टाइम लैग बहुत होता है, बहुत क्यूज होते हैं, कम लोग काम करने के लिए होते हैं, या फिर थोड़ा बर्ताव, ये सब हमें पता है और हमें अच्छा भी नहीं लगता बहुत बार. लेकिन एवरी टाइम
public banks are supposed that they are the secured source of keeping money or depositing your money or taking even loan, but it's not the case. We know in the new era of financial market, money market, we are tending towards more private banks or even foreign banks, and that's why we have so many of foreign banks and private banks in India. Okay, the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance 2017 bill has been passed by Rajya Sabha and is expected to strengthen the banking sector. सो ये जो नया वाला बिल है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का, वो भी पास होने जा रहा है और इट विल स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर. So what is the road ahead if we think about the banking sector? क्या है हमारे सामने फ्यूचर में? Enhancing spending and infrastructure, speedy implementation of projects, and continuation of reforms are expected to provide further impetus to growth. दैट मीन्स जैसे ही हम ये ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बैंकिंग पे, स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाए और रिफॉर्म्स होते जाए सेक्टर में, दैट मीन्स हम ज़्यादा ज़्यादा वही सेक्टर में इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी लाते जाए, तो इसके हिसाब से हम ग्रोथ के ही रास्ते पर चल रहे हैं. Okay, all these factors suggest that India's banking sector is also poised for robust growth as the rapidly growing business would turn to banks for their credit needs. That's why जैसे ही हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर का तो ग्रोथ हो रहा है लेकिन इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन दे विल टर्न टू बैंक्स for their more requirement of money for loans. Okay, credit needs. Also, the advancement of technology have brought the mobile and internet banking services to the fore. Do you think that during this lockdown period we have started using more money and mobile internet and plastic money or internet banking things? Do you know that? Have you ever used that, like GPay, PhonePe or something like that? Are you using it? तुम्ही वापरता का ते? अशा प्रकारचं कोणतंही जे तुम्ही मोबाईल बँकिंग किंवा मोबाईलवरनं तुमचं अकाउंट ऑपरेट Yes. करता? Yes. So throughout these days, we have started using more and more internet banking as a core banking or a mobile banking as a core banking. असा विचार करा मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो की काही वर्षापूर्वी किंवा अगदी काही महिन्यांपूर्वी, लेट्स टॉक इट अबाउट 2 years बॅक, we are so afraid to use any form of internet money or internet banking services, mobile banking services, because we were afraid that हमें पता नहीं होगा क्या होगा. आपल्याला माहित नसेल की अरे काय होईल आमच्या पैशाचं, जर गेले तर काय होईल, जर चुकून पैसे काढले गेले तर आम्हाला परत मिळणार की नाही, काय होईल, ह्या सगळ्याबद्दल आपण खूप जास्त टेन्स्ड होतो. पण आज अशा प्रकारचं म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, इट्स नॉट गुड, बट असा एक टर्न आलाय की ज्याच्यावर आपल्याला स्वतः बँकेत जायला म्हणजे we are kind of afraid to go to banks in a way that there is much more people in the banks and there are queues, and we are just breaking the point of public distancing or social distancing. Okay, so we are tending to use towards mobile banking, and that's how the banking sector is laying a greater emphasis on providing improved services to their clients and also upgrading their technology infrastructure in order to enhance the customers overall experience as well as give banks the competitive edge. एक्झाम्पल तुम्हाला ऐकायचं आहे? लेट्स सी, जर समजा तुम्ही ICICI बँकच्या आय मोबाईल ॲपमध्ये गेला. ओके, सो तुम्ही जर तिकडे गेलात तर तुम्हाला डायरेक्टली फक्त 4 आकड्यांचा पिन टाकायला लागतो. सो इफ यू जस्ट हॅव टू एंटर 4 numbers as a pin, and then you enter it in the zone, and from that point you can do anything and everything that bank is providing or bank is availing to a customer. You can invest in your demat account and in shares in mutual funds. You can take insurance, you can start new account, you can ask for debit credit card, you can take a gold bonds or funds, and you can transfer funds. Obviously that's the basic need. Also you can see
how you can get training for investing in the market. So there are multiple applications that you can do through one single app, and four numbers that can be counted as your pin. Okay, definitely. After every transaction they ask you for rate. I mean, how would you rate this transaction? अगर फास्टर हुआ है, हमें कुछ झिकझिक नहीं हुई है, तो हम डायरेक्टली 8 9 7 स्टार्स देते देते जाते हैं आउट ऑफ 10 स्टार्स. अगर ज्यादा हुआ है तो हम 1 2 3 और उस देते हैं. फिर वो हमें रीजन पूछते हैं कि क्यों आप इतना कम स्टार दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम था, और उसके हिसाब से वो अपना परफॉर्मेंस सुधारने में लगते हैं. सो दैट्स हाउ दे हैव गेन देयर एफिशिएंसी. और डेफिनेटली ये सिर्फ आईसीआईसीआई का बैंक का प्रमोशन नहीं है, ऐसा हर टाइप का बैंक करता है. दैट मीन्स सॉरी, दैट मीन्स देर इज अ कॉम्पिटिटिव एज. हर एक बैंक दूसरे बैंक से बेटर परफॉर्म करना चाहता है. Okay, let's see. Many banks, including HDFC, ICICI, Axis, are exploring the option to launch contactless credit and debit cards in the market shortly. So, what is contactless? Do you know that? तुम्हाला माहिती आहे कॉन्टॅक्टलेस डेबिट क्रेडिट कार्ड काय आहे? येस. हा, सांग प्लीज. ते आत्ता मध्ये नवीन आलं होतं, म्हणजे पहिल्यांदा येस येस, आवाज नाही येते मला. ओके, तू माईक ऑन कर जेव्हा तुला रेंज करावं देईल. लागायचं. पण एकदा आता एकदा काय परत त्या जेणेकरून निशिकांत परत रिपीट करणार, कारण तुझा आवाज गेला होता. आत्ताची जी डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड बँकने नवीन लॉन्च केली आहे, ती आपल्याला स्वाईप करावी लागत नाही मशीनमध्ये. ती नुसती टॅप जरी केली तरी लगेच त्याच्यावरनं जास्तीत जास्त 2,000 पर्यंत किंवा 5,000 पर्यंतचं पेमेंट होतं. Exactly, very good, very very nice. Okay, so it's a Wi-Fi cards in the sense तुम्हाला ते स्वाईप करायला लागत नाही, तुम्हाला पिन पण घालायला लागत नाही. You don't have to apply pin. You just have to tap on that machine and your money is gone. So that's kind of scary for people like us, but yeah, it's very fast way. Even the you have that Samsung Mini app if you have Samsung phone, or even any kind of phone which scans your debit card from both sides, and then you don't have to carry your debit card. You just can tap your phone on that machine if the machine is provided, definitely, and then money can be gone. So you don't even have to carry the debit card or credit card. You just have to scan your card on that on your phone. That's it. So that is how contactless credit and debit cards work. Okay, the cards which use nearly field communication NFC. Okay, त्याच्यावरनं मला आठवलं की आय गेस लास्ट ऑक्टोबर किंवा अशा, म्हणजे साधारण 1 वर्षापूर्वी असं आपण म्हणूया. सो माझ्याकडच्या त्या वायफाय विजा कार्डवरती ते माझ्या डोक्यातच आलं नव्हतं. मी कधी बघितलंच नव्हतं रादर की त्याच्यावर वायफायचं चिन्ह आहे. आणि मी सबवे मध्ये गेले होते. ओके, आय वॉज व्हिजिटिंग सबवे अँड आय हॅड माय सँडविच अँड वी वर गो आय वॉज पेईंग. सो ही सेड ओके मॅम. He took my card. He just tap on that. I hadn't seen that Wi-Fi sign. Okay, and I was thinking, why is he tapping my card on that machine only? Is he like waiting for something or is something else? So I was waiting, and then he returned me my card. So I just asked, is there not sufficient balance? Is there any problem with that? So he said, no ma'am, payment is done. Like, I was so shocked for 2 minutes after coming to my seat. I was talking with my friends and I was really, really shocked that my money was gone just by 2 taps, and I have earned it very with the very hard working. Just 2 taps are needed to send back the money. As in, मला इतका शॉक बसला होता की त्यानंतर मी शक्यतोवर पुढचे काही ट्रान्झॅक्शन ते कार्ड वापरून केली नाही, दुसऱ्या कार्डवर करायचे. सो लाईक मी या कार्डवरून, म्हणजे या अकाउंटवरनं त्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करायचे आणि ते कार्ड वापरून द्यायचे, कारण त्याला स्वाईप करायला लागायचं. इट वॉज नॉट वायफाय कार्ड. बट नाव आय एम कम्फर्टेबल विथ दिस डेफिनेटली. बट फॉर दॅट फर्स्ट फ्यू ट्रान्झॅक्शन आय वॉज रिअली स्केअर्ड, जस्ट बिकॉज आय डोंट हॅव टू पुट द पिन इन इट. ओके, but that was a fun part. Okay, let's go with the text. The cards which use
a near field communication NFC mechanism will allow customers to transact without having to insert or swipe. That's what we saw. आणि मला वाटतं तुमचं टेक्स्ट थोडं पूर्वीचं आहे, आता आपण ऑलरेडी ती टेक्नॉलॉजी वापरतोय. मिस्टर बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ मायक्रोसॉफ्ट Microsoft Corp, has started that India will move, had stated that India will move quite rapidly to a digital payment economy in as little as 7 years. And we have seen that through the few of these years, we have just changed the interface of paying. In the sense, जैसे भीम आया, भीम के साथ अदर एप्स आए, फोन पे, जी पे, वॉट एवर पे, पेपल पे, पेमेंट एप्स, वॉट एवर, हम वो पूरा का पूरा इंटरफेस जो है वो बदल गया है पेमेंट का, right? As little as 7 years, based on the introduction of digital payment banks, combined with the other things like direct benefit transfers, universal payment interface and Aadhaar. तो definitely जब भी हम आधार को बहुत गालियां देते थे, आधार हैज बिकम अ प्राइमल कनेक्टिविटी पॉइंट, आधार एंड पैन, सो दैट आपका पेमेंट बहुत ही इजी हो सके. ओके, लेट्स गो अहेड. There are some issues with this industry. Definitely every industry has issues, and there are some issues with banking industry. I had talked about non performing assets very little. The first is non performing asset. NPAs, उसका short form होता है. NPAs have become a grave concern for the banking sector in couple of years and impacted credit delivery of banks to a great extent. In the sense, in एनपीएस इतने बढ़ गए हैं कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इसका बहुत ही ग्रेव इशू बन गया है, एंड इट हैज इम्पैक्टेड क्रेडिट डिलीवरी ऑफ बैंक्स. मतलब पूरा का पूरा एक जो क्रेडिट डिलीवरी का ओपन सिस्टम होता है अच्छे से, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है ड्यू टू दिस एनपीएस or the fear of NPS. As the survey, net NPS amount to only 2.36% of total loans in a banking system. So सर्वे जो हुआ है उसके हिसाब से एनपीएस कितने होते हैं, 2.36% ओनली ऑफ द टोटल लोन्स इन द बैंकिंग सिस्टम. However, if restructured assets are taken into account, stress assets account will be 10.9% of the total loans in the system. In the sense, ज्या प्रकारे अशा नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स क्रिएट झाल्या तर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ॲसेट्स विचार केला तर ते 2.36 नाही तर 10.9% ऑफ द लोन्स असं होतं. As per the International Monetary Fund IMF, around 37% of the total debt in India is at risk. सो आतापर्यंत दिल्या गेलेल्या लोन पैकी IMFच्या मते 37% ऑफ द टोटल डेट will be at risk of becoming NPAs or creating NPAs. India's largest lender, SBI, State Bank of India, reported a massive 67% fall in consolidated net profit at 1259.49, that is 1259.49 crore rupees in the third quarter of 2015-16. That was, I guess, time where we were looking in the Kingfisher's problem, Vijay Mallya's problem, and other problems. Okay, 2015-16 financial year, and classified loans worth 20,692 crores rupees as having turned bad. सो आपल्याला जी अमाऊंट सुद्धा, आपण त्यातले 20,692 मिळाले तरी हॅपी असतो यार. 20,692 crores एवढं लोन्स जे दिलं गेलंय ते टर्निंग बॅड, क्रिएटिंग इन टू नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स अशा प्रकारे होत असेल, then it is a very grave concern for Indian or even credit system, whatever credit system we are dealing with. Okay, as per the estimates, the cumulative gross NPAs of 24 listed public sector banks, so estimated cumulative matlab aggregated NPAs of 24 listed banks, including market leader SBI and its associated, stood at 3,93,035 crores rupees on 31st December 2015. I guess that's a very huge amount, and we can say that it is really an engraving issue for us. Okay, let's see the next one.
reduced profit. The banking sector recorded slowdown in balance sheet growth for the fourth year in a row in 2015-16. The profitability remained depressed with the return on assets, that is ROA, मतलब assets के ऊपर आने वाले returns, return on asset, continuing to linger below मतलब वहां पर रहने वाली up to 1%. Further, through PSB's account for 72% of the total banking sector assets, in terms of profit, it has only 42% share in overall profit. In the sense, if you see the profit share in public sector banks is very less if you compare the working or the stretch or the expansion of public sector banks throughout India. Okay, the next part is corruption. Scams in the erstwhile Global Trust Fund (GBT) and the Bank of Baroda shows how few officials misuse the freedom they granted under the guise of sorry guise of liberalization for their personal benefit. In the sense, ये जीबीटी स्कैम था, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्कैम था, जहां पर उनके ऑफिशियल्स ने ही कुछ मिसयूज किया था फंड्स का और फ्रीडम उनको जो पावर्स मिलते हैं उसका, इसकी वजह से सिर्फ एक बैंक को नहीं पूरे उसके नेटवर्क को और पूरे फाइनेंशियल मार्केट को बहुत ही लॉस सहन करना पड़ता है. These scams have badly damaged the image of these banks and consecutively their profitability. Obviously, एकदा एक scam उघडकीला आला, if they get exposed, then whole bank's image gets down, gets lowered, deteriorate, and with that, they have to feel, they have to like suffer through the consecutive losses. Their profitability is also reduced. In the last 5 years, the volume of bank fraud has increased by 19.6% to 5064 cases. So त्यांच्यात वाढच होताना दिसते फ्रॉड्समध्ये. इतकी रेग्युलेशन्स असून पण 5064 cases, that's the volume of bank fraud happened during the increased during the last 5 years. Okay, so yeah, that's again issue for banking industry. So we have seen three issues: non-performing assets, NPAs, reduced profits, and corruption. Let's see the fourth issue of money transmission. Transmission is a transfer. Okay, like reduced profit, this is also offshoot burgeoning NPAs in the system. With the easing of inflation and moderation of inflationary expectation, मतलब जैसे ही इन्फ्लेशन कम होता जाता है और इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन लोगों को समझ में आता है, द आरबीआई रिड्यूसेस द रेपो रेट by the 100 basis points between January and September 2015. Do you know repo rate? What is a repo rate? तुम्हाला माहिती आहे रेपो रेट काय आहे? खरंच नाही माहिती? ओके, रेपो रेट इज दैट परसेंटेज ऑफ आरबीआई, जो परसेंटेज से आरबीआई मतलब इट्स अ कैश रिजर्व रेशो, और जिसके हिसाब से बैंक्स को कुछ लिक्विड अमाउंट या फिर कुछ डिपॉजिट्स आरबीआई में रखने पड़ते हैं, सो दैट आरबीआई बैंक्स को जैसे उनको रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ लोन्स दे सके. सो इट्स अ सीआरआर, रेपो रेट, डिस्काउंट रेट, ये सब आपको याद रखने हैं. ओके, इसके बारे में ऑब्वियसली पूछा जा सकता है, यहाँ पर नहीं आगे भी जाकर. ओके, however, change in the key policy rate was not reflected in the lending rates, as banks are not willing to transmit the benefits of low interest policy regime due to low availability of liquidity against the backdrop of high NPAs. तो जैसे ही बहुत ज्यादा एनपीएस बढ़ रहे, तो जो भी फायदा होने की गुंजाइश थी थ्रू एनी पॉलिसी, थ्रू एनी रेगुलेशन बाय आरबीआई, बैंक्स आर रियली been afraid to promote that policy. तो लो अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी की वजह से, मतलब कम लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी होने की वजह से लोगों को ये जो फायदा है लो इंटरेस्ट रेट देने का, वो भी उन तक पहुंचने में बहुत ही देरी हो रही है या फिर पहुंच नहीं रहा है. ओके, क्राइसिस इन मैनेजमेंट.
Public sector banks are seeking more employees retire these days, so younger employees are replacing the elder, more experienced employees. तो अभी क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट में बैंकिंग सेक्टर में यंगर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जो एल्डर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज है दे आर गेटिंग रिटायर्ड. दैट्स द फैक्ट. This however happens at junior levels. Definitely हे सगळं junior level वर जास्त होतं. As a result there would be a virtual vacuum at the middle and senior level. So जो middle और senior level होगा जहाँ पर experienced people की जरूरत होती है, वहां पर vacuum मतलब कमी क्रिएट हो जाएगी. द एब्सेंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट कुड लीड टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बैंक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो ऐसे हो सकता है, होपफुली नॉट, कि ये मिडिल और सीनियर लेवल मैनेजमेंट में जो वैक्यूम होता है, एक्सपीरियंस का वैक्यूम है, उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैम्पर हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एंड वी आर थिंकिंग कि हमारा ट्रेनिंग इतना अच्छा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन लेट्स होप. और आप में से भी जो कोई बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करेगा, आई विल से बी मैच्योर एंड फोकस ऑन योर वर्क सो दैट this fear we can just roll out कि हमारा स्टूडेंट वहां पर है. सो shouldn't be like that. Okay, rather than एक अच्छा एम्प्लॉय अगर उनको मिलता है, then we can reduce a little bit crisis of management. Okay, cyber threats definitely a major issue during these days. An estimated 95% of transaction in India are paid for cash, but with the growing penetration of computers and smartphones and increasing access to the internet, Indians are taking to the digital channels. You know that already, we have discussed it, for their banking needs. Cybercrime is becoming a ग्रेटर थ्रेट एज ए रिजल्ट. द क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन बढ़ रहे, अब ये कोविड केसेस के बारे में भी था, जैसे ही नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ रहे थे, जैसे जैसे उसके हिसाब से नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स भी बढ़ रहे थे, क्योंकि आप ज्यादा फाइंड आउट कर रहे हो. वैसे ही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आने वाला थ्रेट भी बढ़ रहा है. ओके, साइबर क्राइम्स का. द FSR लेबल्ड साइबर अटैक्स as a risk, as a high risk zone for India's banking sector. Okay, the RBI classifies bank fraud as transactions involving any cheating, negligence, misappropriation of fund and forged documents. So ये सब आते हैं under your cyber threat and frauds में. Okay, or these are like core issues of banking sector. These were the issues. There are different types of challenges that are day to day basis faced by banking industry. And again, it is as per your book. Okay, let's see. Since foreign banks are playing in Indian market, uh, again, we have just 5 minutes remaining, so we are going to join again, as it's like rule in these days right now for me, because I want to get done with your portion so that we can revise. And definitely you will be getting Diwali vacation, I guess. So there will be lag of lectures, and I don't want to just make a mess by not taking lecture, and that's why. Okay, so hopefully you will be okay with it. I really don't have any option with that. So you will be joining again जैसे ये लेक्चर खत्म होता है. आपको समझ में आ रहा है, राइट, मैं क्या बोल रही हूँ? So let's see. Since foreign banks are playing in Indian markets, the number of services offered has increased and banks have laid emphasis on meeting the customer expectation. So जैसे ही आपके नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ रहे हैं, फॉरेन बैंक्स आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, सर्विसेज ऑफर्ड भी बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से बैंक्स ने अपने कस्टमर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलना शुरू कर दिया है. ओके, सो पहला है now the existing situation has created various challenges for Indian commercial banks. In order to encounter the general scenario of banking industry, we need to understand the challenges with the banking industry in India. तो इशू है वो इंडिविजुअल बैंक्स के है, इशू है जो रिजॉल्व करने में कुछ एक स्टेप लेने की जरूरत है. लेकिन रूरल बैंकिंग या फिर व्हाट रूरल मार्केट या फिर ये जो चैलेंजेस हम ये देख रहे हैं, वो चैलेंजेस ओवरऑल सभी बैंकिंग इंडस्ट्री में फैले हुए हैं. ओके,
So they are like external threats for bank or external challenges, whereas issues are from internal bank only. hmm. Rural market का देखते हैं. Banking in India is generally fairly mature in terms of supply, product range, and reach, even though reach in rural India still remains a challenge for the private sector and foreign banks. गावांमध्ये पोहोचणं प्रायव्हेट बँकना आणि फॉरेन बँक्सना हे अजूनही कठीण होत आहे. पब्लिक बँक्स डेफिनेटली तिथपर्यंत पोहोचल्या आहेत, पण थोड्या थोड्या एक दोन अशा वगैरे. डेफिनेटली तुम्हीच विचार करा की आता नव्या नव्याने दापोलीत पण वेगवेगळ्या बँक्स उघडायला लागल्या आहेत. त्याच्या आधी दापोलीत पण खूप बेसिक बँक होत्या, युनियन बँक, RDCC बँक, SBI डेफिनेटली. आणि मग हळूहळू नवीन नवीन बँक्स यायला लागल्या. हे मी खूप जुनी गोष्ट सांगते. ओके. In terms of quality of assets and capital adequacy, Indian banks are considered to have clean, strong, and transparent balance sheets relative to other banks in comparable economies in its region. So, तुम्ही जर विचार केलात तर अतिशय क्लीन ट्रान्सपरंट बिझनेस देणं हे आपल्या बँकांचं वैशिष्ट्य आहे. Consequently, we have seen some examples of inorganic growth strategy adopted by some nationalized or private banks to face upcoming challenges in the banking industry of India. So आपण हेही बघतो त्याच्या बरोबरीने की काही लोकांनी चुकीच्या पद्धतीच्या स्ट्रॅटेजीज सुद्धा अडॉप्ट केल्या. For example, recently ICICI Bank Limited merged the Bank of Rajasthan Limited in order to increase the reach in the rural market and market share significantly. So not we cannot say चुकीच्या, पण yeah, inorganic is the word. That's how they use. So natural नसलेल्या पद्धती. So राजस्थानमध्ये ICICI बँकचा रीच जर कमी आहे असं मला कळलं, तर टॉप मॅनेजमेंटने राजस्थानचा रीच कोणत्या बँकेत जास्त, कोणत्या बँकेचा जास्त आहे, सो बँक ऑफ राजस्थान. Okay, so what they do, they have merged Bank of Rajasthan Limited in ICICI Bank Limited in order to increase its reach in the rural market and market share significantly. State Bank of India, the largest public sector bank in India, has also adopted same strategy to retain its position. SBIने पण लगोलग तशाच ऍक्शन्स घेतल्या. It is an process of acquiring इट्स असोसिएट्स, इन द सेन्स तुम्ही नवीन मित्र जोडता आणि तुमचा रीच वाढवता. इट्स लाईक फेसबुक if you think about it. You start you or Instagram, you start increasing your followers or increase your friends, friends of friends or something like that, so that तुम्ही त्या नेटवर्क वाढवून तुमचा रीच वाढवता. ओके. मॅनेजमेंट ऑफ रिस्क. The growing competition increases the competitiveness among the banks. So जैसे growing सॉरी कॉम्पिटिटिवनेस खूप वाढला है, जैसे नंबर ऑफ बैंक्स बढ़े, उनका सेक्टरल एक्सपांशन हुआ है. बट एग्जिस्टिंग ग्लोबल बैंकिंग सिनेरियो इज सीरियसली पोजिंग threats for Indian banking industry. We have already witnessed the bankruptcy of some foreign banks. It is found that Indian banks' are risk management capabilities have been improving over time. So definitely management पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपण रिस्क फॅक्टरमध्ये पडतो. सो हे दोन इश्यू आहेत, रुरल मार्केट आणि मॅनेजमेंट ॲट रिस्क. पुढे आपण दुसरे इश्यू बघूया. ओके. सो लेट्स कट दिस मीटिंग राईट हिअर अँड आय गेस वी कॅन कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके.